Hello and welcome to Examshala. Today in this video we are going to see some important news and editorial analysis of 9th of June 2021. But before getting started, as always, kindly do like, share, subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook and Telegram. You can also download our application from the Play Store section, in which the store section you can visit and find multiple interesting courses like SBI Clerk, RRBPO, Group D exams, SSC exams, UPSC, GPSC and whatnot, where you will be getting free study materials, demo classes, mock test, live classes, as well as online doubt solving sessions to kindly make Examshala your better companion in the process of clearing the government exams and making your life healthy and wealthy. Let's on move to the next video and important topic. So recently the QS study, the QS ranking, basically it is the ranking to reflect the studies and the ranking of the college and universities in a country at the international level, has released its ranking and India has secured. So Indian Centers Learning has secured a good amount of numbers and they have a good amount of scores. So comparatively, we have the latest edition. The QS World University features 22 Indian higher education institutions, one more than last year. So that is a very good increment. Out of 22 there has been top 15 और top 15 के कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो टॉप जो 200 यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ में वी आर एक्चुअली हैविंग 22 यूनिवर्सिटीज़ इन टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड. एंड आउट ऑफ दिस टॉप 200 में हमारी 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, दैट इज़ IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली एंड IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर. And overall, out of 1000, the 222 is IIT Delhi, Bombay, Science, Madras, Guwahati, Roorkee, JNU, Savitribai Phule University, Pune, Jadavpur and IIT Bhubaneswar, जो कि अभी रैंकिंग नहीं थी, बट स्टिल दे आर इन द रिसेंट नंबर्स जो अभी आकर आगे बढ़ी हैं. Now we'll study and we'll discuss what is the QS World University. QS World University rankings है क्या चीज़. So the QS stands for Quacquarelli Simons, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है जो कि हायर एजुकेशन ऑफ द वर्ल्ड के दुनिया की जो भी बड़े बड़े उच्चतर माध्यमिक और उच्च विद्यालय यूनिवर्सिटीज़ के स्टैंडर्ड्स को मेजर करती है फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स एडमिशन लें या गवर्नमेंट में स्पेंडिंग हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू को मेजर करने के लिए देयर हैज़ बीन अ रैंकिंग जो पहले द के नाम से जाने जाते थे, THE. Initially it was known as the THE ranking, the rankings, and the full form was Times Higher Education Ranking, जो कि टाइम्स मैगजीन के साथ होती थी, which had a tie-up with the QS rankings. और उसका नेम चेंज होके टाइम्स हैज़ मूव्ड आउट एंड इट इज़ ओनली अ क्वाक्रेली साइमंड्स यूनिवर्सिटी और रैंकिंग, दैट इज़ द 2010. एकमात्र, दिस इज़ द ओनली वन यूनिवर्सिटी or ranking, this is only one university ranking parameter which has been also accepted by the international ranking expert group, that is IREG. So it has been accepted or assimilated or been created by the IREG grouping. There are several other ratings also from Stockholm University rating, multiple ratings, even the Asian Universities rating, ADB ratings, but this QS University ranking has been traded as the world benchmark for the measuring the industries or other universities and their qualifications, their presentations, their eminence, as well as their importance in the society as well as the country. Basically 51 disciplines, यानी कि टोटल 51 डिसिप्लिन्स हो सके, अलग अलग डिग्रीज, अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग सब्जेक्ट को कंपाइल करके इन बेसिक 5 ब्रॉड सब्जेक्ट्स में कंपाइल किया जाता है, डेट इज़ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस एंड मेडिकल, नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट. सो 5 एरियाज इन दिस 5 सेक्टर्स आर इंक्लूडेड इन द रैंकिंग्स. अलॉन्ग विद दैट, रैंकिंग करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ को अलग अलग रैंक देने के लिए कुछ विशेष पैरामीटर्स इंक्लूड किए जाते हैं, जिसमें से पहला पैरामीटर होता है द रिसर्च. वो यूनिवर्सिटी कितना रिसर्च बेस्ड है, कितने रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दैट इज R&D इज हाउ मच. सेकेंड इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द फंक्शन, यानी कि यूनिवर्सिटी के पास अपने हिसाब से वर्क करने के लिए कितनी इंडिपेंडेंस है, हाउ इंडिपेंडेंट, व्हाट अमाउंट ऑफ स्टेट, जो सरकारें हैं उनका यूनिवर्सिटी के करिकुलम डिसीजन में या फिर अदर मेजर्स में कितना इंटरफेरेंस है.
थर्ड इज़ कि कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और टीचर्स के रेशियो उसमें अवेलेबल हैं. सो हाउ कॉस्मोपॉलिटन इट इज़, दैट इज़ ऑल्सो अ मेजरमेंट. सो कितने बाहर से लोग पढ़ रहे हैं या बाहर कितने लोग उससे जा रहे हैं, कितना पेपर वर्क डेटा एक्सचेंज हो रहा है. सो दैट इज़ थर्ड इज़ फंडिंग. ऑफ कोर्स कितनी फंडिंग मिल रही है, ठीक है, उस फंडिंग को किस हद तक एक्सपेंड किया जा रहा है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ द एसिमुलेशन एंड द रिक्रिएशन ऑफ द सिलेबस, दैट व्हाट अमाउंट ऑफ सिलेबस, जो सिलेबस हो रहा है वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है इन द कॉमन वर्ल्ड. सो दीज आर सम important parameters, and based on these parameters the universities are ranked, and they are actually being ranked to help the students so that they can identify which university they want to apply in different sector, be it art, engineering, technology, life and science, medical, social sciences and management, जिसमें से रिसर्च पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि कितना न्यू, how much research is being happening and what are the innovations and what are the new methodologies being accepted or acquainted by these universities so that it can be prominent with the coming world, what kind of innovations and how much amount of job utility. सो यूनिवर्सिटी से जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनकी यूटिलिटी आने वाले सोसाइटी में कितनी है उसको भी मेजर करके दैट इज़ बीइंग टेकन. सो देयर आर सेवरल मेजर्स but 6 parameters are the basic parameters. So this QS ranking are subject to 2021 cover disciplines of these particular area, and they also as a global survey for the employers, academics, तो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी academics कितनी है, what are the lifestyles, what are the independence of this management, and based on this a complete ranking is been formed. Now out of जो बाकी के 6 पैरामीटर्स हैं, इंडियन जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको बहुत ही they get actually 0 scores in especially the international faculty, जो international student और faculty वाला जो criteria है, that is in order to have number of international students and faculties and the exchange of data, information, students, multidisciplinary colleges, student exchange program, इसमें we are getting 0 marks. That is the international participation of the Indian universities or the international students in the Indian universities are near to very less or rather minuscule, and that is why we are scoring less number in this, but we are scoring good in research, and that is why we need to further up and we need to make our institution और खास करके यूनिवर्सिटीज़ को ओपन करना होगा, उनकी जो इंडिपेंडेंस है वी नीड टू अलाउ देम, एंड सो दैट कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ कैन इन्वेस्ट इन इंडिया एंड मेक देयर इंटरनेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन. व्हाट इज़ हैपनिंग कि जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ UGC की जो काउंसिल गाइडलाइंस है, दैट आर सो टफ दैट कि बाहर की कंपनीज, बाहर की जो यूनिवर्सिटीज चेंज है, बड़ी बड़ी चेंज आर नॉट एबल टू ओपन देयर फ्रेंचाइज और नॉट ओपन टू देयर सेकेंडरी ब्रांचेस इन कंट्री इन सीक ऑफ सो कॉल्ड द फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन because of the multiple government interventions and the politics related to university, so that we need to clear it out. Similarly, we are also less in the faculty to student ratio, because क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो भी कम है, बिकॉज वी आर ओनली काउंटिंग द परमानेंट फैकल्टीज, वी आर नॉट काउंटिंग द गेस्ट फैकल्टी और टीचर, वेयर इन कंपैरिजन में द अमेरिकन यूनिवर्सिटीज दे आर ऑल्सो काउंटिंग देयर PhD स्टूडेंट्स विच आर ऑल्सो अ पार्ट टाइम टीचर्स. सो in this component we are actually counting our teachers in lesser number in comparison to other, and that is why our score is less. Now इंडिया के उसमें ये भी क्लेम है कि अगर आप बाकी सारे पैरामीटर्स को यूज़ कर रहे हैं तो एक पैरामीटर आपको ये भी यूज़ करना चाहिए कि कितनी सस्ती है पढ़ाई, ये व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ स्टडी, एंड व्हेन वी कंपेयर द कॉस्ट ऑफ स्टडी देन द इंडियन कॉस्ट ऑफ स्टडीज इज़ वेरी वेरी लेस एंड सिग्निफिकेंट. सो ये पैरामीटर अगर यूज़ करेंगे तो हमारा स्कोर बहुत बढ़ जाएगा. लेकिन वो जो कंपनीज़ है खास करके QS रैंकिंग, जो बेसिकली ये देखा जाता है कि दे आर गोइंग टू फेवर द यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़, दे आर एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट फॉर द यूरोपियन एंड द वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ टू सेल देयर मार्केट. सो दीज आर सीइंग एज अ पैम्पलेट ऑर्डर्स टू सेल द प्रोक्योरमेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटीज़. तो उनका एक तरह का एडवर्टाइजमेंट करती हैं ये सारे रैंकिंग्स, क्योंकि इनकी फंडिंग भी कहीं ना कहीं से इन्हीं के पीछे जो बैक करते हैं, वट एवर द ट्रस्टीज एंड वट एवर द सो कॉल्ड chains of the investors and the businessmen which are actually running these universities are actually funding this QS studying. और उनका बेसिक एक काम ही हो रहा है कि यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ को खास करके एंड अमेरिकन यूनिवर्सिटी को दे हैव टू रैंक 1 एंड अदर एशियन यूनिवर्सिटी दे हैव टू डाउन, सो दैट कि एशिया से स्टूडेंट यूरोप और वेस्ट में आते रहे और उनकी जो इंक्रीमेंट है GDP में इंक्रीमेंट होता रहे, फॉरेन एक्सचेंज में होता रहे. एंड दिस इज़ the only reason कि they are not including a parameter that is cost of education, which is very very less in India, and at the time when the world is economically divided, the cost
parameter should be the very basic parameter, but it is not being included. And since it is not being included, what is happening is India's ranking is coming down. So अगर ये कॉस्ट ऑफ इंक्लूडेड किया जाएगा तो हमारी बहुत सी यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप 50 में आ जाएंगी, और इसलिए हमने इसका विरोध भी किया था। अर्ली 2020 में हमने इस रैंकिंग में जाने से विरोध किया, क्योंकि आप जो है सारा का सारा पैरामीटर इस तरह का यूज़ करते हो दैट इज़ गोइंग टू बेनिफिट द वेस्टर्न कंट्रीज, दैट इज़ नॉट गोइंग टू द benefit the Indian countries, and that is why we need to further focus. But apart from that, we also need to correct something. That is, first we need to make some sufficient efforts to increase the teachers ratio, faculty student ratio, international student ratio. So we can do by the student exchange programs, okay, Setu Bharatam program, other different movements programs, that is we can exchange students. How we can exchange? Okay, so Atulya Bharat, Incredible India programs, these kind of programs can be done, especially if not with the European country but with the other Asian countries. Okay, once Nalanda and Takshila was the centers of the international education, we can also achieve that. The only thing is we need to brandize and productize our methods, and then by using this brandizing and the productizing methods, we can actually increase the score in the parameters of international students and study. उसको देखने के लिए कमेटी बनाई गई थी, and they have been working on it. But what we need to do two things. First is zero political इंटरफेरेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़. यूनिवर्सिटीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी तरह का नो अदर काइंड ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और इवन एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस शुड बी डन. फंडिंग शुड बी इंक्रीज्ड. UGC शुड बी मोर ऑफ अ एडवाइजरी बॉडी रादर देन अ regulating body. So autonomy should be given to the universities so that they can work well, and then more and more focus on research and development. And if we can achieve these things, our universities will definitely go up, because the quality of Indian teachers and students are no matching. But the only thing is we are not focusing on the right thing, right area and right place, and that is why we are not getting a better ranking in these studies, which at the same time are actually causing, because many of the students are going out of it and they are spending the Indian money to these European and Western markets, which is actually causing a brain drain as well as money drain out of the India. So we need to recapitalize it and make India an education hub again. Second most important article about is the recently declared Pradhan Mantri Garib Anna Kalyan Yojana. So recently we have seen the PM's address to the nation after the second wave has been slowed down a bit. So he has said that this PM Garib Anna Kalyan Yojana will be sent to everybody. So how it is good and what extra steps can be taken. So people जो है that will include it, and Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, the scheme offers that free food grains to the households. And how much? So under this scheme 5 kg of wheat or rice will be given to 80 crore of, यानी कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं और चावल मिलेंगे आने वाले अगस्त महीने तक. ओके, अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी NSFA एक्ट. So this scheme is very helpful and it is a first step toward the more comprehensive relief package. इसके अलावा भी जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, okay, whatever the people has left from the cities to the villages and the people who are living in the urban areas but they still are jobless, the मनरेगा can be implemented. इनकी फंड बढ़ाने की ज़रूरत है so that there can be two things. First, the infrastructure development at the rural level to be done, and at the same time employment can be increased. So what we need to do is we need to increase the employment level at the rural level so that the economy will be pushed. अगर गाँव में पैसा होगा, if there will be money in the villages, then they will purchase and they will be running in the economy, which in turn will buy the urban products. And thus when urban products will be in demand, then manufacturing industry in the city area will run, and that will automatically lead to the job creation in the urban area. So rural empowerment and the rural economic development is very much important for the growth of urban development. Similarly, in the same thing, we can also apply a similar stage of Manrega to an urban level also, just like in the programs of Smart City or Atal Yojana or Hriday Yojana or Amrit Yojana. And we can use the infrastructure development, especially the medical infrastructure development को काम हम पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, so that we can also increase the infrastructure. Along with that, we can create a job creation, and that job creation will lead to more financial autonomy and the money liquidity flow in the market, as well as the urban to rural area, which will going to increase. If we are recently the World Bank or RBI has progressed that India will grow up to 8.2%. So in order to get that much of growth, we need
to focus on two area. First is the Industrial Index of Production, IIP. So ये जो मैन्युफैक्चरिंग रेट है, मैन्युफैक्चरिंग तब बढ़ेगी जब डिमांड बढ़ेगी, and demand will be driven by two things. First, if we invest more and more in infrastructure projects, especially at the urban and the rural level, so at the same time there will be an infrastructure development, and second, there will be demand of raw materials like steel, cement, electricity, labor, services, and then it will rise the manufacturing of this important core sector. So the 8 core sectors of the economy like coal, electricity, fertilizer, steel, cement, natural gas, petroleum, these will automatically increase. And when these 8 core sector of the economy is going to increase, it is in the same way with the domino effect, that is, one will lead to the other accepting and increasing, and so the rural level economy will also increase, because people earning in the urban area will send the money to the rural area, and at the same time people are having in the rural money, that is, गांव के लोगों के पास अगर पैसे आएंगे, then the local economy will not suffer. And at the same time, what is happening, IMD has predicted a good monsoon. So लगातार 3 साल में we facing a very good monsoon, and when the monsoon is very very good, there has been accepted to 3.6% to 4.2% rise in the agricultural output. So when the agricultural output is increasing, wheat और rice की quantity फिर से बढ़ने वाली है. So we have an enough stocks in the FCI, Food Corporation of India के पास, हमारे पास ऑलरेडी enough stock पड़ा हुआ है. What we need to do is we need to distribute it the poor, so that जो हमारी inequality rate है इंडिया में, that inequality rate is rising so much high. What we can do is we can supply it as a food packet to the migrant laborers and the rural areas, so that the expense in the food and other expenditure can be break down, and those other money can be spent in other services, which in turn lead to the increase in manufacturing as well as service growth. Though if we want to get a 8 to 9% growth in the recent coming years, so to upcoming and to up down the COVID-19 pandemic effects, what we need to do is invest more and more in infrastructure, both at the rural and the urban level, and increase the scope of Manrega. We need to ramp up and give more allocation to Manrega like programs, or even joint with Atmanirbhar Bharat programs. So this is all for today's video. We'll see you in the next video. Till then, stay home, stay safe, take care.